हेलो एंड वेलकम टू जागरण बिजनेस। आज के शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर आशीष गुप्ता, ब्रांड डायरेक्टर Volkswagen इंडिया। बहुत सारी बातें करेंगे मार्केट को लेके, स्पेशली ऑटोमोबाइल मार्केट। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट क्वेश्चन, मार्केट का सिचुएशन कैसा है? क्योंकि 2018-19 में जो वॉल्यूम्स हम देख रहे थे, अभी भी सेम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उतने ही 30 लाख यूनिट सेल्स पे रुकी हुई है। सो व्हाट इज द आउटलुक लाइक एंड वेयर इज द बॉटलनेक? सी आई थिंक अगर आप डिमांड की बात करें तो डिमांड तो काफ़ी स्ट्रांग चल रही है ना। आज के दिन में डिमांड इज एटलीस्ट 20% हायर देन द कैपेसिटी और द अवेलेबिलिटी और आर ability to supply to the market. So demand is strong. The only limiting factor currently is the availability and the supply situation. Supply situation हम सब लोग जब Q1 में बैठे थे जनवरी में, हमने बात भी की थी कि we were expecting कि Q3 तक situation on semiconductors will improve. But last 2-3 महीने में situation in fact has gone back because of the geopolitical situation in Europe, then the fresh lockdowns in China. तो supply situation अगले 6 महीने में भी tight रहने वाली है. So in all these constraints also, I think market will grow by at least 5 to 8% compared to 2021. 2021 में total market was at around 2.9 million, 29 लाख की. इस साल का prognosis या forecast already 31 लाख क्रॉस कर चुका है. So that's already a 5% growth, and I think अगर supply situation improve होती है, industry can end up at around 33 lakhs. बिल्कुल सर। And in this period, last 2-3 years में there has been a huge rise in price of vehicles. Incremental rise हुआ है। And what is the kind of shift do you see? छोटी गाड़ियों के मार्केट में, आपके मिड साइज जहाँ पे आप डील करते हो, what is the trend like? See देखिए, रॉ मटेरियल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है. अगर मैं सिर्फ स्टील की बात करूं, बिफोर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द लेटेस्ट मेजर्स, स्टील प्राइस इटसेल्फ हैड गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़ पर कार. प्रेशियस मेटल्स जो गाड़ी में जाते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम्स वगैरह में, उनकी प्राइस कम समटाइम्स तो 500% बढ़ गई है. तो ऑलमोस्ट 10 to 12% इनपुट कॉस्ट इंडस्ट्री के लिए बढ़ी है. एंड इफ आई सी ओनली अ पार्ट ऑफ दैट हैज़ बीन पास्ड ऑन टू कस्टमर्स. हाउ लॉन्ग the industry can absorb such kind of input costs is a big question mark, and so sooner or later everybody of us has to pass on these things to the customers. At the same time, what has happened is the customers' consciousness about premium features and safety in the car has also gone up. So I see a clear trend towards premiumization in India. I was just going through some data today, and almost 37% of cars sold in India this year have been above 10 lakhs, okay, which is a big change from 2 or 3 years away. So premiumization is definitely happening in India, which is a good trend for brands like us because we do operate in the premium end of the segments. बिल्कुल सर। सर, एक टर्म या एक फिनोमिनन जो जुड़ चुका है हमारे लाइफ में लास्ट 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा है, डिजिटाइजेशन। डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, हैज़ कम इनटू आवर लाइव्स। इनमें से कार सेल्स हैज़ ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ इट। बट डिजिटाइजेशन इन ट्रू सेंस या रियल सेंस में रियली कितना has given you numbers, या कितना ये ट्रेंड रियलिस्टिकली कन्वर्ट होता है? See, I think डिजिटलाइजेशन को हमारे को इस आयाम से देखना चाहिए कि डिजिटलाइजेशन क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है. एक तो लास्ट 2 साल में द फिजिकल टच पॉइंट्स हैड बिकम डिफिकल्ट टू एक्सेस बिकॉज ऑफ ऑल द रिस्ट्रिक्शंस वी हैड बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल. So that has definitely from an environment point of view given a fillip to digitalization. Secondly, digitalization across industries and across platforms has improved accessibility to products, services and brands for customers. That is why I see it as a huge enabling factor into our business as well. Considering this, over the last 2 years, we have implemented more than 40 digitalization initiatives across our touch points, whether it is from inquiry generation, prospecting, to booking a car online, to booking a test drive online, to actually buying a car online, to booking a service online. Everything we have tried to make sure that we are accessible on all touch points to customers. And definitely it is giving us results. Just to give you some facts and figures, when we opened the pre-bookings or the bookings for the Taigun, around 5% of our bookings were online. For the Virtus, this has already gone up to 15%. Okay, so that's the kind of evolution that is happening because customers now have more accessibility to the brand and to information. बिल्कुल सर। सर, और एक मुद्दा ज़ोरों शोरों से मार्केट में चल रहा है इज़ अराउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब देखिए, इट्स द ओपिनियन इज डिवाइडेड। देयर आर कार मेकर्स जो अच्छा बना रही हैं, बेच रही हैं, एंड इट्स कंट्रीब्यूटिंग टू देयर वॉल्यूम्स, एंड देन देयर इज अनदर फ्रैक्शन विच इज सेइंग
वी नीड टू वेट 2025 2026 देयर इज अ टाइमलाइन टू इट. आप कौन से दायरे पे खड़े हो, व्हाट इज योर स्टैंड? आई थिंक इंडस्ट्री में इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हैज टू हैपन इन इंडिया. इसमें किसी का कोई दो राय नहीं है. इट्स अबाउट व्हाट आर द स्टेप्स नीडेड टुवर्ड्स मास इलेक्ट्रिफिकेशन. देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन को हमारे को इस तरह से सोचना चाहिए कि इट्स नॉट के प्लग एंड प्ले है. आज हमने गाड़ी सोची और कल आ गई, राइट? इंडस्ट्री इवॉल्व होगी over the next 4 years, where by 25-26 we foresee electrics constituting around 5 to 8% of the overall market. 5 to 8% in 25-26 will mean a volume of 3 lakhs to 4 lakhs electric cars a year. That is the time frame when mass electrification will take place. Okay, so 2022 से 2025-26 तक is the preparatory phase. There, we as a group already have an advantage, right? We have a global platform and global portfolio available, right from our premium brands to Volkswagen, which is leading electrification across the world. So what we will do, and I would like to do, for example, in the next 3-4 years, is that bring in our global portfolio, first of all, in limited volumes. That gives an opportunity for us to test out our vehicles and also to get customer feedback for mass electrification. Move from fully built units from global portfolio to local assembled, and then full localization, which is when mass electrification will take place in the second half of this decade. This, I think, is the roadmap everybody is following, but I don't think anybody in the industry is right now sitting on the fence. Everybody knows this has to happen. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Like always, it was great talking to you, and I hope audience has all the answers they were. I hope so too. So thank you so much for your time as well. Thank you so much.